Namaskar, I'm Shailaja Gaur, Assistant Teacher from Government Model Primary School Kadoli, Block Raipur, Dehradun. Today, we are going to work on some activities. So let's start. These activities are from NCERT textbook Marigold, Class 4, Subject English, Unit 1, Neha'S Alarm Clock, Part-3. This is Part-3, and earlier in Part-2, we read the chapter Neha'S Alarm Clock. Part-2 में आपको याद होगा हमने Neha'S Alarm Clock चैप्टर पढ़ा था और उसमें न्यू वर्ड्स भी पढ़े थे. आपको याद होगा कि नेहा's अलार्म क्लॉक, नेहा एक लड़की की अलार्म क्लॉक के बारे में कहानी थी और कैसे वो जागती है, हर रोज वो कुछ सोचती है, वो सही हो जाता है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. तो लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. पॉइंट्स टू डिस्कस. रीड द एक्सरसाइज, comprehend the exercise, learn and make new words, questions and answers. ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So the activity starts with reading is fun. But before that, I want to repeat the story. इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर्स शुरू करें, एक बार कहानी को दोहरा लेते हैं. आपको याद होगा कि नेहा नाम की लड़की की नींद अलार्म क्लॉक की आवाज से खुलती है और जब वो सुबह उठती है तो उसका मन उठने का बिल्कुल नहीं करता और वो मन में सोचती है काश अलार्म क्लॉक अपना जॉब भूल जाए. और ऐसा ही होता है. अलार्म क्लॉक गिर जाती है और अगले दिन कोई आवाज नहीं आती. लेकिन 6 o'clock कुछ चर्पी बर्ड्स विंडो सिल पर उसको उठा देती हैं. तो उस दिन भी जब वो उठ जाती है तो वो विश करती है कि काश ये बर्ड्स मुझे नहीं उठाए. तो नेक्स्ट डे ये विश भी पूरी हो जाती है. ना तो अलार्म क्लॉक और ना ही बर्ड्स उसे उठाती हैं, लेकिन कोई और आ जाता है जो उसको उठा देता है. और आपको याद होगा, इट वॉज बिग ब्राइट सन. तो सूरज की तेज रोशनी से उसकी आंखें खुल जाती है. फिर वो सोचती है काश ये सूरज भी मुझे ना उठाए. तो नेक्स्ट डे ये विश में पूरी हो जाती है और नेक्स्ट डे ना तो अलार्म क्लॉक, ना ही बर्ड्स, ना ही सन उसे उठाते हैं. सन भी क्लाउड्स के पीछे होता है. लेकिन फिर उसकी मदर उसको उठा देती है. अब वो विश करती है कि मम्मी को ये काम ना करना पड़े, यानी मम्मी मुझे ना जगाए. तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि ना अलार्म क्लॉक, ना बर्ड्स, ना सन और ना ही मदर की वॉइस से वो उठती है, बल्कि उसकी नींद अपने आप खुल जाती है एग्जैक्ट 6 o'clock. ना अलार्म क्लॉक, ना बर्ड्स, ना सन और ना ही उसकी मदर उसे उठाती है और उसकी नींद अपने आप ही मॉर्निंग में खुल जाती है. और वो उसे बड़ा आश्चर्य होता है और वो अपनी मदर से पूछती है कि मुझे किसने उठाया. तो उसकी मदर बताती है तुम्हारे अंदर एक क्लॉक है, उसने उठाया. और इस तरह से उसे पता चलता है कि हमारी एक क्लॉक होती है जो हमें हर काम को करने का समय बताती है, कब हमें खाना है, कब सोना है, कब जागना है. तो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. टिक द करेक्ट आंसर. सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है. नंबर 1. What time did Neha's clock ring every morning? हर सुबह, every morning. हर सुबह नेहा की क्लॉक किस समय आवाज करती थी, बजती थी
या उसका अलार्म किस समय होता था? So option number A 4 o'clock, B 9 o'clock, C 6 o'clock. So out of these A, B, C options, the correct answer or option is 6 o'clock. Right? Now, number 2. What did the bird say? चिड़िया क्या बोलती थी? What did the bird say? चिड़िया ने क्या बोला? A. Sleep on. सोते रहो. B. Wake up. जाग जाओ. C. Go and play. जाओ और खेलो. So, the correct answer is wake up. क्योंकि जो little chirpy birds थी, they were saying wake up fast, wake up dear. So this is the right answer. Question number 3. What is inside you that makes you get up at the same time every day? Inside means अंदर. Makes करती हैं या बनाती हैं. Get up at the same time. Question number 3. What is inside you that makes you get up at the same time every day? Every day, हर रोज same time एक ही समय पर. What is inside you? तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो तुम्हें उठा देता है? Get up, उठा देता है. तो आपके अंदर ऐसा क्या है जो हर रोज एक ही समय में रोज मॉर्निंग में अगर आप 6 o'clock उठते हैं तो 6 o'clock आपकी नींद खुल जाती है. आप 5 o'clock उठते हैं तो 5 o'clock आपकी नींद खुल जाती है. So what is that inside you? So there are 3 options. Our body clock. हमारे अंदर की एक क्लॉक है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक या बॉडी क्लॉक कहते हैं. Our eyes हमारी आंखें. Our feet हमारे पैर. So the right option is our body clock. Right? Now, 4th is put the letters in the right order. Letters को सही क्रम, right order, सही क्रम में रखना है. One has been done for you. एक आपके लिए यहाँ पर कर दिया गया है. This ILESM. तो ये उल्टा पुल्टा है. So correct order is SMILE, smile, मुस्कान. Second, MRALA. So right order is ALARM, alarm. Third is OCKLC. So CLOCK, clock, घड़ी. Next, NORMING. So the right order is MORNING, morning. Next, EDORNS. So right order is snowed. SNORED, snowed, खराटे. Next is WODWIN. WINDOW, window. So these are the words made by putting the letters in right order. Smile, alarm, clock, morning, snowed, window. Next activity is let's listen and talk. आओ सुने और बात करें. 1. Listen to the sounds around you when you are on your way to school.
जब आप अपने स्कूल के रास्ते में होते हैं तो आप आसपास अराउंड यू अपने आसपास की साउंड्स आवाजों को लिसन सुने. डिस्कस विद योर फ्रेंड द साउंड्स दैट यू हर्ड. सुना और अपने फ्रेंड के साथ जो साउंड्स आपने सुनी हो उनके बारे में बातचीत करें, डिस्कस करें. लिस्ट देम हियर और यहाँ पर उनकी एक लिस्ट बनाएं. So there are two headings: sounds you heard, sounds your friend heard. अब आप जब बातचीत करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि आपने कौन सी आवाजें सुनी, and the sounds your friend heard, तुम्हारे दोस्त ने कौन सी आवाजें सुनी. For example, you can write horns of taxi, talking people, P-E-O-P-L-E, talking people, लोगों की बातचीत. Rustling of leaves. Rustling of leaves, R-U-S-T-L-I-N-G. Rustling of leaves, पत्तियों की सरसराहट. जब हवा चलती है तो पत्तियां आपस में टकराती हैं और एक आवाज सी पैदा करती हैं. वो आवाज पत्तियों की सरसराहट, रस्लिंग ऑफ लीव्स कहलाती है. नेक्स्ट, chirping of birds. पक्षियों की चहचहाहट. पक्षी जो चिड़ियाएं जब चहचहाती हैं तो वो आवाज chirping of birds. Then loudspeaker. लाउडस्पीकर की आवाज. Sounds your friend heard. आपके दोस्त ने एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं horns of buses, flowing water. कहीं पर पानी बह रहा होता है तो उसकी आवाज सुनाई दे सकती है. crowing of cock, मुर्गी की आवाज. नेक्स्ट, साउंड्स ऑफ मूविंग थिंग्स. चीजों को इधर उधर रखने की आवाज. एंड crying of babies. रास्ते में घरों से बच्चों के रोने की आवाज भी सुन सकते हैं वो. So these are sounds you can heard or you heard when you come to school. Horns of taxi, talking people, rustling of leaves, chirping of birds, loudspeaker, horns of buses, flowing water, crowing of cock, sound of moving things, crying of babies. Now, in second question, let's see. If there is no clock in the house to wake you in the morning, अगर घर में सुबह तुम्हें जगाने के लिए कोई भी घड़ी ना हो, how will you wake up? आप कैसे जागेंगे, आप कैसे उठेंगे? So there are many ways we wake up in the morning. हम आंसर में लिख सकते हैं. Answer 2.
If there is no clock, I can wake up by sunlight, सूरज की रोशनी से, or by mother's call. Mothers. Now, last question. What are the different ways of knowing the time during the day? दिन में समय को जानने के क्या क्या तरीके हैं? Different ways, अलग अलग तरीके. Knowing, जानना. Time, समय. During the day. During the day means दिन के समय. So, दिन के समय टाइम का पता लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? So, you can write answer. You can start from here. The different ways of knowing the time during the day are wristwatch, mobile, and sun. आपने देखा होगा बहुत से लोग सन को देखकर कि वो अब कितना ऊपर है, किस पेड़ के पीछे चला गया है, टाइम बता देते हैं. So, the different ways of knowing the time during the day are wristwatch, mobile, and sun. In this exercise, we are going to find out hidden words. आप देख सकते हैं कि ये hidden words हैं mother, birds, clock, alarm, happy, morning, holiday, hungry, Sunday. So let's find out these words in this maze or grid. First word, mother, is already given there. Mother पहले से दिया है. Now come to the second word, birds. B-I-R-D-S, birds. Third, clock. C-L-O-C-K, clock. H-U-N-G-R-Y, hungry. Next, we can find out morning. M-O-R-N-I-N-G, morning. Sunday. S-U-N-D-A-Y, Sunday. Happy. H-A-P-P-Y, happy. Alarm. A-L-A-R-M, alarm. H-O-L-I-D-A-Y, holiday. So, these are 9 words. Mother, birds, clock, alarm, happy, morning, holiday, hungry, and Sunday. So these 9 words are there hidden in this grid. Birds, clock, mother, hungry, holiday, alarm, Sunday, happy, morning. Come to the next exercise. This is exercise for pronunciation. Say aloud. You can speak with me loudly. Ought. O-U-G-H-T. Ought. Bought. B-O-U-G-H-T. Bought. Caught. C-A-U-G-H-T. Caught. So, ought, bought, caught.
These are similar sounding words. Matter, M-A-T-T-E-R, matter. Chatter, C-H-A-T-T-E-R, chatter. Shatter, S-H-A-T-T-E-R, shatter. Matter, chatter, shatter. Similar sounding words. Tick-tock, T-I-C-K-T-O-C-K, tick-tock. Tell-told, T-E-L-L-T-O-L-D, tell-told. Train time, T-R-A-I-N-T-I-M-E, train time. Tic-tac, T-I-C-K-T-A-C-K, tic-tac. Tip-tin, T-I-P, tip, T-I-N, tin. Take tall, T-A-K-E, take, T-A-L-L, tall. So, once again, ought, bought, caught, matter, chatter, shatter, tick-tock, tell-told, train time, tic-tac, tip-tin, take tall. So, practice these words. Next is, let's write. आओ लिखें. So, first exercises. Who said these words and to whom? किसने इन शब्दों को कहा और किसे? यानी नीचे कुछ शब्द दिए हैं जिन्हें किसी के द्वारा किसी को कहा गया है. तो देखें. Verses, wake up dear, wake up fast. तो आपको याद होगा चैप्टर में जब नेहा सो रही थी तो बर्ड्स वर वेकिंग हर अप और वो बर्ड्स थी जो उसको बोल रही थी वेक अप डियर, वेक अप फास्ट. तो वो कौन थी? हु सेड, किसने कहा? बर्ड्स. और किसको कहा? नेहा. राइट. नाउ नंबर 2. माँ, who woke me up today? माँ, मुझे आज किसने उठाया? Again, आपको याद होगा it was Neha who said these words and to her mother. तो उसने अपनी मदर को ये पूछा था. Next, why do you sleep at 9 every night? तुम every night, हर रात 9 बजे क्यों सो जाती हो? Again, this was said by her mother. So, mother ने बोला था और नेहा को बोला था. So, who said these words to whom? Wake up dear, wake up fast. Birds ने बोला था नेहा को. माँ, who wake me up today? नेहा ने mother को. Why do you sleep at 9 every night? Mother ने बोला था नेहा को. In this exercise, use the help box to fill in the blanks. Blanks में आपको help box में was, were, ये 2 words दिए हैं जिनकी मदद से आपको इसको complete करना है. So let's start. A. Ram was. क्योंकि राम सिंगल पर्सन है, so singulars के साथ was और plurals के साथ were आता है. So Ram was a good football player. राम एक अच्छा फुटबॉल प्लेयर था. The cows were. Plural है. Cows were grazing in the field. गाय मैदान में घास चर रही थी. Grazing, घास चरना. My toys were broken. Again plural to were. Her frock was too long. The market was closed. The children
सिंगुलर चाइल्ड और प्लूरल चिल्ड्रन. सो यहाँ पर हम यूज करेंगे वर. द चिल्ड्रन वर हैप्पी. द फ्लावर्स वर kept in a vase. Ram was a good football player. The cows were grazing in the field. My toys were broken. Her frock was too long. The market was closed. The children were happy. The flowers were kept in a vase. Look at the picture below and complete the following paragraph. You will need these words. आपको नीचे का पैराग्राफ पिक्चर्स देखनी है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है दिए गए वर्ड्स की हेल्प से. पुल्ड आउट, इनसाइड, कॉल्ड आउट, बिहाइंड एंड अंडर. पुल्ड आउट खींचना, इनसाइड अंदर, कॉल्ड आउट पुकारना बुलाना, बिहाइंड पीछे, अंडर नीचे. सो यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक. कल मुझसे किताब खो गई. I looked for it everywhere. मैंने इसे हर जगह देखा. I looked, अब आप देख सकते हैं, behind the door. I looked behind a door. दरवाजे के पीछे देखा. I looked inside a cupboard. मैंने अलमारी के अंदर देखा. I looked under a bed. मैंने बिस्तर के नीचे देखा. I could not find it anywhere. Anywhere कहीं भी. मुझे ये कहीं भी नहीं मिली. Then I called out. Called out Sheru. Sheru, her dog. She's calling Sheru. You can look at the picture. Sheru, my dog came running to me. मेरा dog भागता हुआ मेरे पास आया. I asked him to look for my book. मैंने उसे अपनी किताब ढूंढने के लिए कहा. He pulled out another book from my bag. उसने मेरे बैग से दूसरी किताब खींचकर निकाल दी. So it's very funny कि वो समझ गया, डॉग समझ गया कि उसको बुक के लिए बोला जा रहा है और उसने दूसरी बुक निकाल कर दे दी. Last exercise, fun time. There is a picture of clock. You have to write its sound. Another word for clock. You have to draw a picture. यहाँ पर start करते हैं. इस clock की sound. In this fun time, there is picture of a clock. Write down words relating to clock. इस clock से related words को आपको लिखना है. Let's start. Sound. Clock की sound. Tick, tick. Another word for clock, we can write watch. Here you have to draw a picture. आप clock की picture यहाँ बना सकते हैं. Word in your language. तो हम लिखते हैं यहाँ पर घड़ी, क्योंकि in my mother language I call it घड़ी. Make a sentence. एक सेंटेंस बनाना है. This is my clock. Name different parts. आप इस क्लॉक के डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर लिख सकते हैं. जो इसका दिस फ्रंट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड डायल. DIAL, डायल. और इसके जो हैंड्स हैं, नीडल्स हैं, वो आवर नीडल जो घंटा बताती है समय, कितने घंटे हो गए. सेकंड नीडल जो बताती है कि कितने सेकंड्स हैं. मिनट नीडल. राइट. एंड समटाइम्स स्टैंड. इनमें स्टैंड भी हो सकता है. Here, with morning, we have to write some words related to morning. So, हम लिख सकते हैं sun rays. Morning tea. सुबह उठते हैं तो चाय भी पीते हैं. Morning tea. Here you can draw a picture.
मॉर्निंग को आप अपनी लैंग्वेज में सुबह, इन माय मदर टंग, हिंदी में हम सुबह कहते हैं। आप देखिएगा कि आपकी मदर टंग या आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उसमें मॉर्निंग को क्या कहते हैं। देन मॉर्निंग के साथ chirping birds, जैसी सुबह होती हैं बर्ड्स चहचहाने लगती हैं। और एक और वर्ड है मॉर्निंग के साथ dawn, जो सनराइज से पहले का रोशनी वाला, सूरज के आने से पहले जो रोशनी दिखाई देती है उस उजाले को dawn कहते हैं। नेक्स्ट assignment for your home is make a puzzle or a grid with hidden names of wild animals. जंगली जानवरों के नामों को छुपाते हुए कोई पजल या ग्रिड बनाइए। Ask your friends to solve it. और अपने फ्रेंड से इसको सॉल्व करने के लिए कहिए। This is your home assignment. You can make different puzzles, different activities to find out animal names hidden in that puzzle. So, in today's session, the points we discussed are read the exercise, comprehend the exercise, learn and make new words, questions and answers. So, in today's session, we worked on exercise related to chapter Neha'S Alarm Clock. Hope you've enjoyed this. Thanks for watching.